Good afternoon, dear students and concerned teachers. I am Smita Patel from TPS High School, Banpali. Welcome you all to this live virtual class from our Sundargarh district. Dear students, in the previous class, we have learnt about fourth stanza of the poem, of beautiful poem, Nine Gold Medal, written by American rock vocalist, singer, radio artist, and song composer too, named by David Roth. So, dear students, in that fourth stanza, we have learnt about three important things. What are they? One is that anything, if you want to achieve in your life, then you have to do lots of hard work. ତମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ମ୍ୟାଡାମ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କେବଳ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମକୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ର କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନାହିଁ. You have to do hard work to achieve something in life. So, dear students, in your life, see in this point, in that fourth stanza, we have learned that para athlete from all over the country comes to achieve gold medal, silver medal, and at least a bronze medal. And for that, they have worked so hard. They have practiced month wise, मास धरी वर्ष धरी से बहुत सारा कौन प्रैक्टिस करिकी ओलंपिक रे मेडल पाइबा पई आसी थांती नै किछि अचीव करबा पे आसी थांती. एवं अब्दुल कलाम कर a famous quote on dream is that, see, dream is not what you see while sleeping, but dream is that does not let you sleep. Okay, dream is that thing which does not let you sleep. Means स्वप्न यह नुहे जहाँ तुम शोईकी देखी था, स्वप्न यहाटे जहाँ तुमको शोइबा को दिए नहीं. सो डियर स्टूडेंट्स, तुम लाइफ रो जो गोल अच्छी, देर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल. नहीं, सो लॉन्ग टर्म गोल रे आमे कोई परिबा कोन, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और teacher too. So whatever you want to do in your life, that is a long term goal, that is different thing. But to achieve that long term goal, you have to utilize each and every moment of your day wisely. Right? So next important thing kono ame sikle na, to achieve our success, on the way to success, on the way of our success, we फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. आमे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आमे फेस करथौ नहीं. सो आमे से प्रॉब्लम रे कोन आमे अटकी न जाई कोन करबा आवश्यक, हमकु कॉन्फिडेंस सहकारे सिगुडी को फेस करबा आवश्यक नहीं. with confidence we have to face them, and we have to continue our work along with that towards our success. So that is the second thing. And last thing is that on the way of our success, we should respect other perspective too. अन्य मानक perspective को मध्य आमे कोन सम्मान देबा आवश्यक नहीं. For example, if you are second topper of your class, and if you will hate your first topper or first position friend, then that is not a good thing. So we should inculcate what? Empathy towards others. We should respect everyone. So dear students, let's go to the smart board and learn about our 9 gold medal. Thank you. So dear students, आमे प्रथम फोर्थ स्टैंजा रे कोन पढिथिले ताहा आमे टिके रिकैप करनेबा. See summary of the first four stanza. The athletes had come from different countries to participate in the game. They have put a lot of effort to compete on these games. नहीं, आमर कोन होइतला ना, the athletes माने विभिन्न आमर विभिन्न कंट्रीज रु आथिले
पार्टिसिपेट करबा पई गेम रे दे हैव पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट केवल आसी नथिले से माने बहुत मास मास धरी कोन करथिले प्रैक्टिस करथिले आ से माने कम्पीट करबा पई आसीथिले देयर गोल तांकर गोल कोन थिला देयर गोल वाज टू विन गोल्ड सिल्वर और एटलीस्ट अ ब्रोंज मेडल नहीं से माने मेडल जीतवा पई आसीथिले नहीं नेक्स्ट द spectators means what the audience here you can see so many spectators gathered and they are also not simply sitting they are cheering to the sports person नहीं तो एथलेट मान को से माने कोन करछंती cheering करछंती by raising their hand से माने hand raise करिगिरी so spectators were gathered around the field से field ता old field थिला नहीं so they were cheering the participants एठी जेमती चेयरिंग करछंती तांको उत्साहित करछंती सेमती से माने कोन करथिले उत्साहित करूथिले नहीं नेक्स्ट इट वाज ए 100 yard dash race कोन थिला सेटा लास्ट इवेंट ऑफ दैट ओलंपिक गेम थिला एवं ताहा 100 yard dash रेस थिला देयर वर 9 एथलेट्स केते जण पार्टिसिपेंट थिले 9 एथलेट्स who were participating in that event नहीं तो मैंने participate करथिले when the signal was given signal most important thing in the Olympic game signal was given by का द्वारा सिग्नल दिया जाए हमारा पिस्टल माध्यम से नहीं so when the signal was given they started running तो मैंने रन करिवा स्टार्ट करथिले during the race the smallest among them ये ना smallest among them fell on the track हमरो कोन हला से माने रेस स्टार्ट करले एवं स्मॉलेस्ट तांकर सबुठारु जे स्मॉल थिला से कोन हला से पड़ी गला नहीं ट्रैक ऊपर एहा थिला हमर फोर्थ स्टैंडर प्रथम चारटी स्टैंडर समरी नेक्स्ट आमे जिबा फिफ्थ स्टैंडर को ओके सो डियर स्टूडेंट यू आल्सो रीड विथ मी he gave out a cry in frustration and anguish his dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. So dear students, first we will know about all the unknown words. What are they? Frustration. When you तमे जोटा करिवा पाए भाबिथिबो तमे सेटा जदी तमरो अचीव न हला तमे आजि भाबिथिलो होमवर्क आजि जेमति हेले कंप्लीट करिवि नहीं जदी तो सेटा पूरा न हला केमति लागे फ्रस्ट्रेटेड लागे आजि मोर कंप्लीट हेनी जेति मोर अचीव करिवा कथा सेटा मु करि पालिनी आजि कॉपी सबमिट करबार अछि फ्रस्ट्रेशन लागे के फील हुए सेमति तमे कोनोसी जिंस खाइबा पे इच्छा करथुबो ताहा मिलिबोनी हां तम भौणी की तम छोट भाई की खाई रहिथबो हेले तमे कोन हबो फ्रस्ट्रेटेड लागे कि नहीं सेमती दिस वन होपलेसनेस निराश बोध हेबा नहीं सो एंग्विश ए ग्रेट मेंटल पेन एंग्विश आमे अनुभव करू नहीं गभीर मानसिक जंत्रणा जोटा आमे भाबिथो जोटा करिया पई ताहा अचीव न हेले हमको बहुत मानसिक जंत्रणा लागे नहीं टेस्ट टू डिस्ट्रॉय विनाश हेबा डट धूली देन occurred means to happen जो कोनसी गोटे घटना घटिबा को कहा जाए occurred next understand line by line so dear children he gave out a cry in frustration and anguish here who is he is the smallest athlete right so he gave out a cry in frustration and anguish से मध्य कोन बहुत मास धरी वर्ष धरी कोन प्रैक्टिस करछि मात्र से तार कोन हला जेते बेले स्टार्ट हमर समस्ते रनिंग करिया पय स्टार्ट करछंती से स्मॉलेस्ट जी अटे से स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड नहीं आमे जे झुंटी पड़ला एवं से भारसाम्य हराई बसी कोन हला फेल इनटू द ट्रैक से पड़ी गला से समय से कोन हला से संगे संग उठी न पारी से जानि पारला जे तारो जेति सब से मास धरी वर्ष धरी जो प्रैक्टिस करिछि ताहा से अचीव करि पारिबो नाही तेणु से कोन हला फ्रस्ट्रेशन फील कला तार गभीर मानसिक जंत्रणा हला नहीं ही गेव आउट अ क्राई एवं से कांदिबा को लागिला इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डॉट मींस तार जो से स्वप्न देखिथिला ऑल द ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स
से जेकी तार परिश्रम थिला ताहा से ता आखि सामना रे कोन धूलिसात हे हेबार से देखिबा को पाइला नै से फील कला he felt that now he will not achieve his goal what he thought what he want to achieve and he came to this se asithila kon kariya pai achieve gold medal or silver medal or at least a bronze medal किंतु ताहा से achieve करि परिबो नाही नै काहे कि ना से भारसाम्य हरे बसी एवं समस्ते कोन आगो को माडी चलचंदी next but as sure as I am standing here telling this story here who is I am here I denote to whom the poet कहउचंती as sure as I am standing here मु जो एथि ए जो इवेंट होउची कि तार प्रत्यक्षदर्शी भाबरे मु ए स्टोरी कोन नेक्स्ट घटिला ताहा आपण माननकु पुंखानुपुंख भाबरे जणैबी नै द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट occurred नेक्स्ट जहा भी घटिला ताहा मु आपनकु जणैबी कहउचंती पोएट नै so next 6th stanza let's recite with me the 8 other runners pulled up on their heels the ones who had trained for so long to compete one by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. So, the first we discuss about unknown words. Pull up on their heels means they stopped running. नहीं मैंने तांको feet को कौन कले से मैंने stop हे गले नहीं जो आगो को बढ़ेवा कथा ताहा से मैंने तमे रही गले they stopped running train means you know very well about what is train talim deba nahi compete to take part in a competition whenever we take part in any competition we compete with other children nahi bring one to feet to make oneself stand taku chida habare help kariba nahi so let's understand the poem line by line the 8 other runners there are how many athletes are there there are 9 nahi so 9 athletes are standing they are competing with one another so when one smallest among them fell down so rest of the 8 other runners pulled up on their heels ସେମାନେ जो आगो को बढ़ी चलथिले सेटा ସେମାନେ कोन हले ସେମାନେ तांको पाद को कोन हले ସେମାନେ पुल्ड अप कले ସେମାନେ रही गले अटकी गले नाही the one who had ran for so long to compete ସେମାନେ जो समस्ते केवल जोड़े नुहे समस्ते तांकर डिस्ट्रिक्ट रे ब्लॉक रे डिस्ट्रिक्ट रे तापरे स्टेट रे देन नेशनल लेवल कंट्री रे तांकर कोन कम्पीट करी से माने ओलंपिक को जो जाईचंती एते परिश्रम करिकरी समस्ते कोन करले ट्रेनिंग मध्ये नैचंती से माने बहुत सारा कोन करचंती तालीम मध्ये नैचंती सो लॉन्ग टू कम्पीट से माने को कम्पीट करिवार अछि अन्य कंट्री रो कोन खिलाड़ी मानक सहित सेनु सेति पई से माने बहु मात्रा रे परिश्रम करी जो प्रैक्टिस करी आसी चंती सेगुडी को कोन हला one by one they all turned around and went back to help him say 8 other athletes से माने से निजर अचीवमेंट को कोन से माने भूली जाई तार से जो जड़े तांकर साथी जो से पड़ी जाइखला से मध्ये अन्य कंट्री रो नहीं किंतु ताकू से माने हेल्प करबा पई समस्ते कोन कले टर्न बैक नहीं टू हेल्प हिम and brought the young boy to his feet एवं से माने ताकू सहायता कले ता फीट रे छिड़ा हेबा पई नहीं निज गोड़ रे से माने ताकू छिड़ा हेबा पई हेल्प कले नहीं से माने चाहि थले कोन होइतांदा they can go ahead they can try for their own success नहीं से माने निजरो अचीवमेंट पाई से माने ट्राई करि पारथंते से माने आगो को बढ़ी थांते
से माने कोन से माने भाबी थांते जे नाही हमरो गोटिए कोन हमरो गोटिए जो कॉम्पिटिटर थिला से कोन हैला हटी गला देन वी विल गेट द सक्सेस but they don't think about their own achievement or own success. They keep that empathy forward नहीं तांकर empathy जो अन्य प्रति जो सहानुभूति जो मनुष्यपणी आछि ताकू से माने आगरे रखिले नहीं. So next देखिबा कोन हैला Then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk. And a banner above that said, Special Olympic could not have been more on the mark. So dear students, in this poem, see, to give answer in multiple choice questions, for multiple choice question, you have to learn each in every line cautiously. So you have to remember that remember each and every one, line, and you have to also read that line carefully. Then all the nine runners joined hands and continued. नहीं हमें first unknown words देखी देगा reduce to make something less ह्रास नहीं. So banner, you know what is the banner means हमें बे विभिन्न प्रकार प्रोग्राम रे वन महोत्सव हो किंबा रोड सेफ्टी हो आमे विभिन्न प्रकार बैनर तैयारी करथौ नहीं. सो कंटिन्यू मीन्स टू कीप हैपनिंग विदाउट स्टॉप. आमे कोनोसी जिंस को कंटिन्यू रखिबा को कुआजे आमे कंटिन्यू यू नो दैट वन वेरी वेल. ओके सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड द स्टांजा. देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड. से माने जो अन्य जो ताकू जो स्मॉलेस्ट अमंग देम से कोन हला से पड़ी जाइतला नहीं ताकू से माने उठे ताकू हेल्प करले उठिबारे ना. दे all of them they turned back and help him to stand on his feet, and also they complete that rest of the part by walking नहीं. से माने जो rest of the part थिला से ट्रैक जो रेस टाकू से माने कौन कले कंप्लीट करले बट दौड़ी कि नुहे कौन चली चली नहीं समस्ते कौन कले हाथ धरा धरी हेले जॉइन हैंड्स एंड कंटिन्यूड एमाने सेमाने सेई तांकर जर्नी टाकू कंटिन्यू रखिले. द 100-yard dash now reduced to a walk. तांकर जो रनिंग इवेंट थिला ताहा परिवर्तन होई गेला कोथरे वॉकिंग रे नहीं. से वाक माध्यम रे से जो हमर रेस्ट ऑफ द कोन जो रास्ता जो थिला ट्रैक को से माने कंप्लीट करले वॉकिंग माध्यम रे. एंड ए बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक. एटा जो ओलंपिक थिला ताहा कोन हेगला स्पेशल ओलंपिक बोली कुआ गला. कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क. एही भली एक स्वतंत्र धरणर इवेंट स्वतंत्र धरणर घटना घटी थिबारु एहा को कोन गोटे स्पेशल ओलंपिक नहीं बोली एहा को सेमती ही पारा एथलेट मानकर पई एहा करा जाय. तेणु एहा सेमिति ही गोटे कोन अटे ताकू स्पेशल ओलंपिक बोली कुहा जाय नहीं. आउ एई स्पेशल ओलंपिक रे जो एभली एक घटना घटिला ताहा ताकू आहुरी स्पेशल कर देछि नहीं. सो next last stanza of this poem. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. So dear students, first know about the unknown words. Ovation means expression of popular appreciation for their mastery performance. Means whenever someone gets any achievement, we stand or we clap or we cheer them नहीं. सेटा को से माने आमे जो कोन एक्सप्रेशन करू आमे जो तांकू चीयर अप करू ताकू कह जाय ओवेशन. नेक्स्ट बीमिंग फेसेस उज्जवल मुख नहीं से माने जो अचीव करिसंती ताकू तांकर फेस रे जो
तमे जेतेबेले कोनोसी जिंस मध्य जोटा तमे कोन अचीव करिया पई चाहि थबो ताहा जेतेबेले अचीव करिवो सेतेबेले तमरो फेसेस रे जो ग्लो आसे नहीं दैट इज कॉल्ड सेतेबेले तमे तांको कोन आसीबो बीमिंग फेसेस मींस उज्जवल मुख नहीं. Let's understand the poem line by line. That's how the race ended. Race end हे गला केमती एंड हला ना समस्ते जो हाथ धरा धरी होई ताकू रनिंग नहीं रनिंग ताकू से माने कन्वर्ट कर दिले. दे कन्वर्टेड दैट रनिंग इवेंट टू द वॉकिंग इवेंट नहीं by holding one another's hand and they complete that and also they all of them got what 9 gold medals नहीं से माने जो प्रकार मनीष पणिया देखैले सेथि पई सेई इवेंट रे तांकू समस्तंकू कोन दिया गला 9 समस्तंकू 9 जनकू गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित करा गला. So they came to the finish line holding hands still. Finishing line हमारा था जो starting line and finishing line नहीं तो finishing line पर्यंत से माने जो holding hands नहीं की walking करी करी से माने जो रेस टाको कंप्लीट कर ले they completed their race by holding hands still नहीं शेष पर्यंत लास्ट एंडिंग लाइन पर्यंत समस्ते कौन हाथ धरा धरी हुई कंप्लीट कर ले. एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस एई जो घटना घटला से स्टैंडिंग ओवेशन समस्त छिड़ा होई की जो जो स्थान रे थिले जो ऑडियंस माने थिले स्पेक्टेटर्स माने थिले से माने कोन छिड़ा होई तांको स्टैंडिंग ओवेशन देले समस्त तांको सैल्यूट जणले समस्त तांको क्लैपिंग माध्यम रे कोन तांकर जो एई एम्पैथी शो करिसंती ता पई बहुत बहुत खुशी होई तांको कोन कले सम्मानित प्रदर्शन कले. said more than these words ever will. What कहउचंती whatever these things he had written जोटा भी से लिखिचंती ताठू बेसी जो तांकर जो एक्सप्रेशन से जो सेई फील्ड रे से जहा कोन कले अनुभूति नैथिले ताहा तांको एई पोएम ठू मध्य अधिक शो करूची नहीं से जो तांकर स्टैंडिंग ओवेशन all the by our audience नहीं audience माने जो standing ovation दिले and also that beaming faces of all the 9 athletes that says more than these words. okay एई जो poem रो जो words माने अछि सेई गुडा ठु भी बेसी तांकर जो उज्जवल मुख तांकर जो अन्य को सहाय्य करिवारे जो तांकर खुशी तांको चेहरा रे देखा जाउथला एवं से माने सेही तांकर एम्पैथी एवं सिंपैथी जो एम्पैथी जो शो करथिले ता पई जो सम्मान मध्य से माने पाइथिले बाय 9 gold medal that shows that beaming faces and standing ovation of the audience that says more than these lines of the poet by David Roth नहीं. So all this about your poem. I hope you have understood all the things. So let's sum up this all the poem, all the 8 stanzas. What is the summary? This inspirational poem. Inspirational means what? एहा हमको इंस्पायर करूची नहीं एहा ए जो स्टोरी टा अछि ताहा कोन पढिबा पय हमको इंस्पायर करछि. It inspires us to help others नहीं. We have to keep our empathy or to show helping thing is more than our own achievement. This poem says us to help others before thinking about yourself. Okay, so the inspirational poem is about an event of a Special Olympics. Special Olympics ro gote event ro eha वर्णना करछि. This tells us how 8 differently abled athletes, okay, how 8 differently abled athletes gave priority से माने प्राधान्यता देइछंती to help their fellow athletes नहीं तांकर जो सांग एथलेट को हेल्प करिवा पई का से कोन हेल्प करिवा पई who fell down rather than competing for gold से जो पड़ी जाइतला ताकू हेल्प करिवा पई से माने तांकर जो गोल्ड पछरे न धाई ताकू जो हेल्प कले नहीं ताहा इथरे हमको कोन करूची इंस्पिरेशन दउची नहीं ता विषय रे एथरे
कौन कराई वर्णना मध्य कराई so in this poem the poet first tells us how all the athletes had trained hard. All the athletes, they are not simply coming to this game to achieve something. They have all tried, all practiced, all trained hard to compete with their friends, with their athlete friends, in the game. So how they were all keeping in mind the gold, silver and bronze medals that were for the winners. Then he gradually goes on explaining the events. After that, he explained who? The poet David Roth explained about the event. What event? At the last event of the day, that was the last event of the day thila nahi, last event of the day was approaching, and for that event excitement grew high. Means all athletes, also all the audience, they are also excited about this last event, which was what? 100-yard race. nahi, 100-yard race जो इवेंट थिला सेति पई समस्त एक्साइटमेंट थिले नहीं. Grew high in the spectators who gathered around the old field. That old field was old field, and they are all excited, and in that excitement all the spectators cheering the athletes. The blocks were lined up. Here the blocks were lined up for the event, and 9 differently abled athletes were ready behind the starting line waiting for the signal to start. समझते कौन आमर सिग्नल से मैंने वेट करथिले कौन आमर स्टार्टिंग लाइन रो पछपटे नहीं 9 डिफरेंटली एबल एथलेट माने. When the pistol exploded, pistol जेते बेले शब्द कला आमर मु कहितली कौन आमर जेते बेले ओलंपिक गेम रे आमर स्कूल मान को इवेंट रे केमती स्टार्टिंग पई सिग्नल दिया जाय व्हिसल माध्यम रे, किंतु ओलंपिक गेम रे कोन करा जाय पिस्टल एक्सप्लोजन द्वारा कौन करा जाए नंबर सिग्नल दिया जाए नहीं. So they all are waiting for the signal to start. When the pistol exploded to signal the beginning of the race, the athletes all rushed forward. All of them, they started to run when the signal exploded, when the pistol exploded नहीं. But unfortunately, दुर्भाग्यवशतः, unfortunately, what happened? One of them who was also smallest of them, lost control and fell on the track. See, कौन कला? See, पड़ी वाला नहीं. So next, what happened? The young boy was unable to get to his feet. Suddenly, when you तमे जते बेले कोनोसी ये रे तमे जदी पड़ी जाओ सेते बेले संगे संग तमे देखिबो आमे उठी पारू नी नहीं तमे तो उठीबा को समर्थ होनी मात्र सेही समय रे सेही बोली सेही मध्य जते बेले से फेल कोन ट्रैक रे पड़ी गला से मध्य उठीबा को समर्थ हैला नाही. The young boy was unable to get to his feet in agony and frustration. से मध्य से बहुत frustration feel कला. The helpless athlete gave out cry. जे मध्य सेठी हेतबो से सिचुएशन रे जे मध्य कोन हेबो से मध्य कांदिबो नहीं. Then what happened? The incident which surprised everyone present there. One incident happened after that which surprised everyone. नहीं सरप्राइज कला समस्तन को कोन इवेंट हेला ना other athletes when saw their fellow runner down से मैंने जेते बेले देखले तांकर गोटे सांग कोन तळे पड़ी जाईसी they stopped there नहीं से मैंने समस्ते कोन हेले stopped हे गले, stopped running and turned back. All of them turned back नहीं. When the boy was they all helped the boy forgetting about their training and the gold medal. All the 8 other athletes, they forget about that gold medal and also about their lots of hard work or lots of training. They all forget, and what they do? When the boy was up, they all joined hands and walked to the finishing line. So माने समझते कौन बोले? They joined hands one by one and they go forward with walk. नहीं, so माने
ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକଟିକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ନା the finish line happily they complete the finishing line happily the crowd was cheering for them all of them they are cheering by they also giving standing ovation they clapping nahi so everyone present there gave them standing ovation semane tanku standing ovation dele so dear students एगुटी आमे पोएम विषय जानिले नहीं एबे आमे फर्स्ट देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन माने केमती केमती तमरो आसीबो से अनुसार तमे जेमती क्वेश्चन दिबो से अनुसार तमे आंसर देबा को चेष्टा करिवो सी डियर स्टूडेंट्स this one I will explain for you why was the smallest athlete frustrated or why did the smallest athlete cry in anguish smallest athlete hey there are 9 athletes 9 para athletes and smallest among them why he cried in frustration se kon kala se frustration re cry kala ki nahi kon pai ame dekhiba explanation the smallest athlete had lost his balance and fallen down nahi se kon kala se ଯେତେବେଳେ କଣ କଲା ନା ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ତା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ କଣ କଲା ସେ ଫେଲ୍ ପଡିଗଲା ସେ ସମୟରେ he was unable to get up and could see his dreams were dashed in dirt ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେ ନେଇଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲା ତାହା ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ he realized that all his efforts, hard work, determination were of no use. Nahin, this made him frustrated and he gave out a cry in frustration. ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ frustration ହେଇକି cry କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା Next, what did the other athletes do when the smallest athlete fell down or which incident during the final event was inspiration for all? ନାଇଁ କଣ ହେଲା ना ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ among them ସେ एथलेट ସେ କଣ କଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଏମତି ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଇଭେଣ୍ଟ କଣ ଘଟିଲା when he fell down all the 8 other athletes they also stopped they also turned back and what they do they help him नहीं ଆମେ କୁ explain କରିବା କେମତି explain କରିବା now when the other athletes saw the smallest athlete fall they all stopped and turned back to help him they did not think about their own dreams ସେମାନେ ନିଜ dream ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ କଣ କଲେ instead they showed true sportsmanship nice true sportsmanship and went back to help bring the young athlete to his feet nahi they inspired everyone by such spirit semane samastonku gotiye udaharan dele se audience manku that you try for your success for your own achievement but in that way you have to respect other perspective too you have to help others too nahi eha semane tanko କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡେଇଲେ ନାଇଁ so they completed the race together by holding their hands ଏଇଟା ଯୋଉ ଘଟଣା ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖିବ next why did the organizers award 9 gold medals to all the 9 athletes in that final event କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ see why he because he showed what not only 8 of them they all showed empathy they showed humanity to our society nahi sethi pai tanku jo humanity pradarshana kali nowadays we all are running behind our own personal achievement and success but how these athletes showed and also give example that on ଆମର ଯୋଉ
sympathy empathy से माने शो कले ताहा अन्य मानक पई इंस्पिरेशन हेबो बोली कोन कले से ऑर्गेनाइजर जो थिले से समस्त को गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित कले नहीं। सो आमे याकू लिखिबा द अदर 8 एथलेट्स हेल्प द यंग एथलेट टू गेट अप फर्स्ट एंड कंटिन्यूड द रेस बाय जॉइनिंग हैंड्स नहीं। दे ऑल केम टू द फिनिशिंग लाइन होल्डिंग हैंड्स सो दे वेर ऑल विनर्स। माने एका सांगरे समस्ते कोन कले से हमर जो एंडिंग लाइन को समस्ते छुईथिले नहीं से माने समस्ते बाय वॉकिंग सो एंड हैड गॉन ओन गोल्ड मेडल। हाउएवर द थिंग दैट हैड made them real winners that they was their true they show their true sportsman spirit तांकर जो प्रकृत कौन खिलाड़ी खेलुआर मनोभाव जो से माने जो स्पिरिट टाकू दर्शाइले जो शो कले हमर ऑडियंस को सेथि पई से माने पाइले। Why did the crowd give standing ovation? The differently abled athletes in the Special Olympic event had shown what true sportsman spirit was like. They had valued humanity more than what? More than their own dreams. निजो ड्रीम्स टू बेसी से माने ह्यूमैनिटी को कोन कले पर्सनल अचीवमेंट को प्राधान्यता देले। This spirit had earned them the respect and appreciation of everyone present over there. So the crowd gave them a standing ovation. Next, what does the poem 9 gold medals teach us? कौन हमको शिक्षा दिए। So dear students, it says so many things. The poem 9 gold medal is a highly educative poem. It teaches us what true sportsman spirit and competitive spirit should be. It conveys the message that love, compassion, cooperation and fellow feeling should be valued more than personal interest, personal achievement and self ग्रेटिफिकेशन एहाठू बेसी आमे काकू ये देबा हम निजर पर्सनल अचीवमेंट ठू बेसी आमे कोऑपरेशन एगुडी को आमे अधिक प्राधान्यता देबा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल एंड यू विल एबल टू गिव द आंसर। सो वन बाय वन प्लीज गिव द आंसर। ही गेव आउट अ क्राई इन व्हिच वन विल बी राइट वन? व्हिच वन? Yes, in frustration and anguish. Next, which word of the following means hit his foot against something? ए मध्यरु को word टा शो करे hit his foot against something तार meaning एटा बुझोची कोटा को word टा which will be the right one? See here, stumbled. Stumble is the right answer. But as sure as I am standing here telling this story, in this line of the poem 9 gold medals, I refers to आई कहा को डिनोट करूची ए लाइन रे जो आई अच्छी ताहा कहा को डिनोट करूची द लिटिल एथलेट एंड द अंपायर द टॉलेस्ट एथलेट और द पोएट। व्हिच वन इज द राइट वन? यस, दिस वन वेरी इजी वन। ट्राई टू गिव द आंसर डियर। द पोएट। वेरी गुड, द पोएट। द पोएट, वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the message of the poem 9 gold medals? आमे ए पोएम रु कोन मेसेज पाउछु कोटा राइट आंसर हेबो। टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन विथ करेज इन ए रेस द पार्टिसिपेंट शुड शो डिटरमिनेशन टू others or to show empathy with others who are in distress, to try to win a race by hook or by crook. Which one is the right one? Yes, try to give the answer. Which line you think that it is most appropriate answer for this question? Okay, try to give the answer. To show empathy with others who are in distress. Okay, this one is the right one. What did the banner above say? हमरो ए जो ओलंपिक जो पोएम रे तांकर जेते बेले से माने कोन कंप्लीट करले बाय वॉकिंग द रेस, आफ्टर दैट बैनर रे कोन लिखा हितला तांको प्रे? Special Olympic. Yes, very good. Special Olympic लिखा हितला नहीं। What message does the poem 9 gold medals convey? ए पोएम रो कोन मेसेज हमें ऑप्शन बी पाउछु? ऑप्शन बी Option C is the right one.
to show empathy to those in distress. Okay. Okay. Who gave the athletes a standing ovation? क्यों माने standing ovation देले? other athletes देले, audience देले, organizer देले और performers देले. किए देले? आमे poem रे पढ़ी छे. कौन है right one? कोटा right option है वो? Yes. Option C. Option C. No. Option C is standing ovation. No. Option B. Not option A. option A नॉले option B नॉले option C. आमे देखिथिले सेठारे कोन जोटा भी खेल हुए से समय रे को माने देखुथांती ऑडियंस माने देखंती कि नहीं आमे जते बेले खेल होउची कोनोसी फील्ड रे हेले आमे ऑडियंस माने देखु कि नहीं हेले आमे ऑडियंस माने ही तांको कोन चीयर करथौ बैक क्लैपिंग सेमती ऑडियंस माने जते बेले सेमानंकर एई प्रकार देखिले तमे सेमाने जते बेले कंप्लीट करले रे से ऑडियंस माने ही तांको स्टैंडिंग ओवेशन देले सो व्हिच वन इज द राइट वन ऑडियंस इज द राइट वन so and a banner above that says Special Olympic could not have been more than the kon habo finishing line correct side mark banner what the right answer habo Option A. No option A is not the right one तुमको एथिपाई line by line option C option yes option C is the right one mark okay you have to remember you have to learn line by line that's why and a standing ovation and that side more than these words ever will. Kota have 9 winners, 9 gold medals, 9 beaming faces, the sportsmanship. Kota have right one. 9 gold medals. B. Option B. 9 and a standing ovation and that side more than these words ever will. कौन से standing ovation से poet last line रे कौन कहते से माने जो standing ovation देले एवं कौन देखी कि कौन तांकर पोएट रो लाइन ठू मध्य ताहा बेसी महत्व बेसी वर्णना करे बोले कहिसंती मु लास्ट लाइन रे ताहा वर्णना करथिली 9 बीमिंग फेसेस जो 9 एथलेट थिले डिसेबल्ड एथलेट समस्त 9 गोल्ड मेडल पाइले ऑप्शन सी वेरी गुड तांकर जो 9 बीमिंग फेसेस थिला ताहा बेसी वर्णना करथिला कोन तांको पोएम रो लाइन ठू मध्य so this one is the right option why did the other 8 runners go back se mane kahi ki pochku pole gale why did the other 8 runners go back what about right answer yes what about both easy see this one is the right one to help the fallen athlete to his Option which one Option C. yes option C is the right one से जे पड़ी जाइतला ताकू ता फीट रे हां ताकू छिडावा पई हेल्प करबा पई जाइतले नहीं सो व्हाट डिड द अदर एथलेट्स डू अदर एथलेट्स से जेतले पड़ी जाइतला अदर एथलेट्स से माने कोन करथले स्टॉप रनिंग टर्न बैक ब्रॉट द यंग एथलेट टू हिज फीट ऑल ऑफ द अबव कोन हबो व्हिच वन इज द राइट वन Option C. सी एम एई सबु जिंस से माने करथिले ओके दे स्टॉप रनिंग एहा मध्ये ठीक they all turned back ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ brought the young athlete to his feet all of the above. yes so this one is the तुमको देखिबार अछि सबुटु appropriate कोन हेले एई सबु ऑप्शन ता ସେମାନେ करचंती नाइ so all of the above is the right one how did the 9 runners continue the race जो 9 runners अछंती ସେମାନେ केमिति कंटिन्यू कले one after another together joining hands at their own pace or slow and steady कौन कले कोटा हबो right one yes try to give the answer very easy one together joining hands कौन हबो together by joining their hands नहीं so what was the 100-yard dash reduced to कोथरे परिणत हो गेला जो 100-yard dash रेस थिला ता कोथरे पड़ी होला ए जॉग Option C. very good option C is the right one walk रे परिणत हो गेला how did the athletes come to the finishing line that same question but in a different manner kon habo walking one after another holding hands still following the young athletes Option C. okay Option C. holding hands still very good how did the race end race kemti end hela with 9 winners with a young winners with a few gold medals all of the above The 9 winners. Option A. The 9 winners. yes very good 9 winners
So why did the crowd give the athletes a standing ovation? समझते standing ovation काहे की देले? For their true sportsmanship, they had finished a hard race, they had won a difficult race, or all of the above. कोटा हबो right one? Yes dear students, try to give the answer. कोटा सबुटु appropriate अछि, कोटा सबुटु ठीक बोली लाଗୁଛି ସେଇଟା ସେଇ ऑप्शन को कुहा. They had finished a hard race. They had finished a hard race. सेति पई तांको दिया गला. टिके टिके आहुरी टिके देखो अन्य ऑप्शन गुडी को. They had won a difficult race. No, They had won a see, dear difficult race. students, for their true sportsmanship, this poem is an inspirational poem of what? As they have showed true sportsmanship, ସେମାନେ जो empathy ଦେଖେଇଲେ ଅନ୍ୟ एथलेट ପାଇଁ जो पड़ी जाइथिला तांकर सबुटु स्मॉलेस्ट जो एथलेट थिला ता ପାଇଁ से जो एम्पैथी शो कले सेईटा ପାଇଁ तांको कोन स्टैंडिंग ओवेशन दिया गला. केवल जणे नुहे समस्ते निजर ड्रीम को पछरे पकाई कि से माने समस्ते ताकू हेल्प करिया ପାଇଁ आसिले कि नहीं सेईथि ପାଇଁ तांको दिया गला. एटा हार्ड रेस थिला बोली नहीं से माने जो टू स्पोर्ट्समैनशिप तांकर जो देखैले नहीं सेथि ପାଇଁ तांको दिया गला. So for that true sportsmanship, okay, eta mone rakhibo. Next, how many gold medals are awarded that day? केतेटा गोल्ड मेडल दिया गला से दिन? 9. Who were happy? को माने हैप्पी थिले लास्ट रे तांकर ग्लीमिंग फेसेस हमें देखियो को पहले को माने हैप्पी थिले? The athletes, the audience, the organizers, everyone present over there. Option A, everyone present there. Very good. Option D, Everyone option present D. over there. Option D is the right one. So, what spoke louder than the words of this poem? कौन बेसी कहूची ए पोएम रो लाइन ठू कौन बेसी हमर पोएम टा को बेसी माने से इंसिडेंट को बेसी The beaming faces of the athletes. The beaming faces of the athletes. Very good. And death and 9 beaming faces said more than these words ever will. कौन हवा? Hello. Which one will be the right one? Hello. Yes. Yes. Try to give the answer. And death and 9 beaming faces said more than the words ever will. The 9 gold medal. See, The 9 gold medal. नहीं आमे बीमिंग फेसेस जेमती शो करूला सेमिति जो स्टैंडिंग ओवेशन थिला नहीं समस्ते जो स्टैंडिंग ओवेशन देले ताहा बेसी कोन करूला रिप्रेजेंट करूला कोन तांकर सक्सेस को तांकर जो एम्पैथी जो शो कले ता से पोएम माध्यम रे जो वर्णना करि पारनथिले सेटा ठू बेसी से जो तांकर फेसेस एवं जो ऑडियंस मानकर जो standing ovation thila taha besi show korthila. So that one is the right one. Okay, so dear students, thank you for listening and also participating in this question answer. I hope you will understood this poem. तमे समस्ते भलो भाबरे एटा बुझी जाइछो तुमको जंती एग्जाम रे तमे सबु question answer भलो भाबरे देई पारिबो. Okay, so dear students, एबे जो how many medals and in which field achieved by Indian in Paris, how many medals से माने कौन अचीव करचंती? अच्छा हमर ए जो पैरालंपिक हेची हाँ तो ताहा तमे माने लेखी की तम इंग्लिश टीचर को देखैबो. ओके आ को फील्ड रे से माने पाइचंती ताहा मध्ये तमे देखैबो. I hope you understood this poem very well and you will able to give the answer in your every exam. Okay, so let's practice and achieve your success. Thank you, dear students.